VIT and this is today's Vpropel question of the day. Stern Brocot sequence. पता नहीं कितना अजीब सा नाम है मतलब. Still, let me explain you. See, we have जैसे हमारे पास फिबोनाची सीरीज होता है और भी कई सारे तरह के सीरीज होते हैं, एंगस्ट्रॉम नंबर्स होते हैं. उसी तरह we have a sequence which is called as Stern Brocot sequence. And over here, what actually happens is we have a0 as 0 and a1 as 1. Now the thing is, suppose if you are finding a term which is an even number, जैसे कि देखो a to I is equals to ai. For example, suppose अगर मुझसे पूछा गया कि what is the second term of this sequence of this Stern Brocot sequence, so see, I can write second term as a 2 into 1. So ultimately I have to find the value of the first term. So value of the first term क्या है 1. So that is why see first term 1 है, second term भी 1 है. Now in order to find the third term, see what we have to do. We have to go for 2 into 1 plus 1 because 2 into 1 plus 1 is equal to 3, right? So what we have to do, we have to find ai plus ai plus 1. We have to do this. Now what is ai? ai is nothing but the first term, it is 1, and ai plus 1 यानी कि second term हमारा क्या, second term is 1, so 1 plus 1 gives you 2. That is why we have third term as 2 over here. और ये पूरा सीक्वेंस फॉलो करना और हमें अपने पूरा एक ये स्टर्न ब्रोकॉट सीक्वेंस बनाना है. Now the thing is, the user will providing you a number n. N basically signifies that up to which term we have the sequence. Okay, suppose if the value of n is 8, so you can see the user will be giving us 8 space separated numbers, okay, in this format, and we have to check whether this format which the user will be giving us will be equal, is whether a part of this sequence or not. That is what we have to check. For example, देखो यहाँ पे हमारे पास 8 एलिमेंट्स दिए हैं, ठीक है, बट जो हमारा स्टर्न ब्रोकॉट सीक्वेंस है ना, उसमें जो 8th टर्म होता है, इट्स नॉट 4, इट्स समथिंग एल्स, ठीक है, इट इज नॉट 4, इट इज समथिंग एल्स. सो व्हाट वी हैव टू प्रिंट, वी हैव टू प्रिंट नो, एज वेल एज वी हैव टू इवन प्रिंट द इंडेक्स ओवर विच दिस लिस्ट is not does not become equals to the sequence. ठीक है, मतलब मुझे बताना है कि पहली बात तो ये कि जो सीक्वेंस तुमने एंटर किया इट इज नॉट अ स्टर्न ब्रोकॉट सीक्वेंस. मोर ओवर एट दिस पर्टिकुलर इंडेक्स, एट इंडेक्स 8, द सीक्वेंस जो तुमने इंडेक्स 8 का जो टर्म है वो गलत है. That is what you have to print. But if the sequence entered by the user is correct, then you have to just print yes. Okay, that is what all we have to do. Now let's move on to the code. See, as the user says, I have to take the look. Once I have this, let me create a list, use list that input dot split. Okay, so देखो यहाँ पे अभी तक से हमने क्या किया है, I have just taken the required inputs और जो space separated input हमें user देगा, I'll be storing it into a form of list inside this list which is named as use list. Now once this is done, now see what I'll be doing. Now I have to define, ठीक है, मैं क्या करूँगा, मैं एक फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ, def stern brocot, ठीक है, and this function will be taking n as input. N is nothing but the number of terms. जैसे हम कहते थे ना कि display Fibonacci series up to 5 terms, up to 6 terms. Similarly over here I will be taking n. N is nothing but up to what term I need the sequence, कहाँ तक, किस term तक मुझे sequence चाहिए, ठीक है. Now see, जानबूझ के मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ जिसके अंदर पहला टर्म है 1. नाउ सी, मुझे आई नो दैट माय फर्स्ट टर्म इज गोना बी 1. Okay, from observation or from anything, I can say that my first term is 1. Okay, my first term is 1. Now see, that is why I've created a list, okay, which is having its first term as 1. Now see, I'll be going for I in range n, if I percentage 2 is equals to 0. What does this mean? See, as you can see over here, this is 2i. What does 2i means? इसका ये मतलब बनता है कि ये जो टर्म है इट्स दिस टर्म इज बेसिकली एन इवन टर्म, ठीक है. मतलब सपोज यहाँ पे मैं कहता कि आई हैव टू फाइंड आउट द a8 टर्म, a8, तो 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट 8 as 2 into 4. So ultimately I'll be finding out the fourth term. Okay, I'll be finding out the fourth term. So how come I got to know this? Because the number 8 is an even number. That is why I've written if I percentage 2 is equals to 0. It means the term which I have to find, if it's an even term, then in that case, answer list dot append answer list int I by 2 minus 1. अब तुम सोच रहे हो कि भाई ये क्या कर दिया तूने. Now see, what I'm doing is, suppose if the value of I is suppose if the value of I is equals to 2. So if the value of I is equals to 2, so what will be my second term? My second term will obviously be 1. See,
This is my second term, it's 1. How come I got to know this? I got to know this because I can write 2 as 2 into 1 and ultimately I'm finding a1. So for that reason what I have done is मैंने क्या किया कि मैंने अपने आंसर लिस्ट में जो i की वैल्यू है इसको डिवाइड बाई 2 कर दिया. ओके, डिवाइड बाई 2 कर दिया, उसका इंटीजर वैल्यू ले लिया, एंड व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम सबट्रैक्टिंग इट बाय 1. व्हाई आई एम सबट्रैक्टिंग इट बाय 1? बिकॉज वी नो दैट लिस्ट में इंडेक्सिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 0 नॉट फ्रॉम 1. दैट इज व्हाई आई हैव टू पर्पसली राइट -1 over here. Okay, that is the reason. And one more thing I missed out over here, I have to write 2 over here and plus 1. What does this mean? I have to start from second index. That is because पहला index हमारा fix है. First index I have 1 as well at my first index. That is why I have written 2 over here. Okay, so this is what it means. Now let me write an else condition. What will be there in the else condition? Else condition में हमारा ये वाला part होगा. Okay, else condition में ये वाला part होगा. So same way I have to write answer this dot and answer list int I minus 1 divide by 2 minus 1 bracket close plus answer list int I minus 1 divide by 2 minus 1 plus 1. ठीक है. Now what is happening over here? See, मुझे क्या चाहिए? मुझे मेरे पास यहाँ पे see they won't be writing over they will be writing find out a3 term. So a3 can be written as a into 2 a 2 into 1 2 into 1 plus 1. Okay, plus 1 हो रहा है. You should notice plus 1 हो रहा है. That is why in order to find the value of I, what I have to do? I have to write something -1 divided by 2, right? तो मैंने वही किया. This is something -1 divided by 2. Okay, divide by 2. और फिर -1 पर्पसली मैंने यहाँ पे क्या, क्योंकि मैंने बताया था कि इंडेक्सिंग स्टार्ट फ्रॉम 0. सो अल्टीमेटली दिस विल गिव मी माई ए आई टर्म. ओके, यहाँ पे मुझे मेरा ए आई टर्म मिल जाएगा. ये जो पूरा चीज़ है दिस विल गिव मी माई ए आई टर्म. नाउ व्हाट आई वांट ए आई प्लस 1. तो देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा +1 यहाँ पे लिखा हुआ है. Okay, so this will give me my AI plus 1 term. This is actually, it's all about indexing. This question is entirely about indexing. If you are familiar with it, you can do it. Okay, so I'm adding these two values and I'm storing it into the answer list. So ultimately what will be happening is for each and every iteration of this for loop, जो मेरा answer list है, it will keep on increasing. इसका length increase होगा. Okay, for first case it will be 1, 1, 2, 3 and so on. Okay, so in this way, finally at the end I'll be returning answer list. Okay, now once this is done, see if finally answer is equals to str and stone Brocot. Stone Brocot. So basically over here I'm calling a function और see मेरा function क्या return कर रहा है? This function is gonna return me a list and this list will be stored in this final answer variable. ठीक है, यहाँ पे स्टोर हो जाएगा. Now see what I have to do. Final answer is equals to use list. What does this mean? देखो मेरे यूजर ने मुझे एक लिस्ट दिया है और मुझे मेरे फंक्शन से एक लिस्ट मिल रहा है. सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई विल बी चेकिंग वेदर बोथ दीज थिंग्स आर इक्वल और नॉट. अगर ये दोनों चीज इक्वल है, व्हाट डज दिस मीन? इसका ये मतलब बनता है कि आप प्रिंट yes, this I have to print. और else में मुझे क्या लिखना पड़ेगा? else print no. And moreover, one more thing I have to do. If final answer I is not equals to use list I print I plus 1. हमें क्वेश्चन में ये भी कहा था कि सपोज इफ द लिस्ट विच विल बी इफ द इनपुट गिवन बाय द यूजर इज नॉट इक्वल्स टू द सीक्वेंस विच वी विल बी गेटिंग, इफ दे आर नॉट इक्वल, इन दैट केस आई हैव टू प्रिंट नो एज वेल एज द इंडेक्स ऑल्सो. सो ओवर हियर आई एम प्रिंटिंग आउट द इंडेक्स. मैं वो इंडेक्स प्रिंट कर रहा हूँ जहाँ पे हमारा एरर आ रहा है, जहाँ पे हमारा सीक्वेंस मैच नहीं हो रहा, एंड देन आई एम ब्रेकिंग इट. दिस इज व्हाट आई हैव टू डू. ओके, लेट मी जस्ट रन इट एंड show it to you that it's working properly. Let's see what is the value of n. The value of n is 8. 1 1 2 1 1 1 2 1 3 2 3 3.
राइट इंडेक्स 8। मैं क्वेश्चन में देखूँ तो देखो, क्वेश्चन में देखो, हाँ यहाँ पे लिखा है दिस गिवन सीक्वेंस इज नॉट अ स्टर्न ब्रोकॉट सीक्वेंस सिंस द 8th एलिमेंट इज नॉट एज पर रूल। देखा यहाँ, इसलिए मेरा यहाँ पे नो आ गया और 8 इंडेक्स 8th एलिमेंट, बस यही करना है, ठीक है। पूरा ये पूरा एक्चुअली कोड है पूरा का पूरा, और मैं पूरा एकदम मैंने इसमें ब्रूट फोर्स लगाया। ओके, वॉट एवर वॉज आस्क्ड मी टू डू आई डिड इट। ओके, आई फाउंड आउट द इंडेक्स बेस्ड ऑन द इंडेक्सिंग ऑफ दिस लिस्ट। आई डिड माई एंटायर ऑपरेशन। इफ यू आर स्टिल नॉट एबल टू गेट दिस, do one thing, watch this video again, or try to write the code on your own by understanding the concept, then you will clearly get it. Okay, so thanks for watching.